let's get started. So we have the May-June question, okay, of the 2023. Okay, so this is the May-June question of 2023, paper 2, variant 2. Okay, that have been recent paper. Okay, got it? Both of you clear? So we'll have to write down theory as well and numerics. So let's get started. There is K Limited, is a manufacturing company which has 2 production departments and 1 service department at one of its factories. Okay, so we have K Limited, who is a manufacturing company which has 2 production departments and 1 service departments at one of its factories. At this factory, absorption costing is used. Okay, so at this factory, the absorption costing is used. So first thing, for 3 marks, we have the theory, that is define each of the following terms. What is cost center, allocation of overheads, and apportionment of overheads. Okay, so make sure everyone understands how do you have to write the answer. Okay, so what is basically allocation of overheads? Allocation of overheads are where overheads are allocated directly. Okay, where overheads are directly attributed to the cost center. Okay, so overheads जो है, when you can directly attribute them, overheads are directly attributable to cost center. Okay, और फिर cost center क्या होता है वो भी डिस्कस करते हैं कि ओवरहेड्स को जो है डायरेक्टली, जैसे कि हम कहते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल्स हैं, डायरेक्ट लेबर है, तो अगर आपको उनकी कॉस्ट पता है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल की आपको कॉस्ट पता होगी, इनडायरेक्ट लेबर की, तो जो ओवरहेड्स जिसकी आपको पूरी कॉस्ट पता है, तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं टू द कॉस्ट सेंटर्स. ओके, टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. ओके, गेटिंग इट क्लियर? फॉलोइंग दैट? अंडरस्टूड? गॉट द डेफिनेशन? कैसे लिखना है? Yes. ओके, व्हाट अबाउट द कॉस्ट सेंटर? तो वो भी बात कर लेते हैं. कॉस्ट सेंटर क्या होता है? एनीवन नोज अबाउट इट? कॉस्ट सेंटर क्या होता है? एंड व्हाट अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स? तो यू हैव टू जस्ट राइट बेसिक डेफिनेशन बिकॉज एक मार्क का है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट सेंटर ये है कि डिपार्टमेंट, इट्स बेसिकली अ डिपार्टमेंट और एन एक्टिविटी टू विच कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट. मतलब कि हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं कि वेयर वी कैन एट्रीब्यूट द कॉस्ट डायरेक्टली. ओके, सो यू कैन से द कॉस्ट सेंटर्स आर बेसिकली डिपार्टमेंट्स or the activities. Okay, these are the departments or activities which can be attributed. Okay, which can be attributed, departments or activities that can be directly attributed. तो वो हमारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं. जैसे कि हमने कहा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर हमारे पास मशीनिंग डिपार्टमेंट है, हमारे पास जो है वो असेंबली डिपार्टमेंट है, हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मशीनिंग डिपार्टमेंट है, फर्निशिंग डिपार्टमेंट है, तो ये सारे कॉस्ट सेंटर्स कहलाएंगे जहाँ पर हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं एक्टिविटीज को, लोकेशंस को, डिपार्टमेंट को. ओके, डिपार्टमेंट्स और एक्टिविटीज वेयर कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड. ठीक है, वेयर कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड. गेटिंग इट गाइस? क्लियर है? Yes. तो एलोकेशन में क्या होता है? एलोकेशन में ओवरहेड्स को डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर्स को. कॉस्ट सेंटर जो है वो अपने आप में एक डिपार्टमेंट या एक्टिविटीज है जहां पर कॉस्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेकिन ये जो अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स होता है, सर व्हाट अबाउट दैट? तो अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स जो होता है वो बेसिकली सूटेबल डेटा पे होता है, सूटेबल बेसिस पर होता है. तो यहाँ पर भी हम ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं. अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स का मतलब ये है कि ओवरहेड्स को जो है इस बार जो ट्रीटमेंट होगी कि हम ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे ऑन बिटवीन द कॉस्ट सेंटर्स ऑन द सूटेबल बेसिस. ओके, ओवरहेड्स डिवाइडेड बिटवीन द कॉस्ट सेंटर्स. जैसे मैंने कहा कि कोई मैंने, जैसे कि यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारे ये दोनों जो है हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं, कटिंग और फिनिशिंग और सर्विस डिपार्टमेंट. तो ओवरहेड्स डिवाइडेड बिटवीन द कॉस्ट सेंटर्स बट ऑन द सूटेबल बेसिस. जैसे कि हमने बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन को बुक वैल्यू पे करते हैं, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट पे करेंगे, रेंट को फ्लोर एरिया पे करते हैं, पावर को किलोवाट आवर्स पे करते हैं. ये सारे सूटेबल बेस होती हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ना. तो ओवरहेड्स आर डिवाइडेड बिटवीन कॉस्ट सेंटर्स ऑन सूटेबल बेसिस. तो अगर आपको मार्क्स चाहिए, इनके डेफिनेशन के मार्क्स चाहिए, तो इनके डेफिनेशन के मार्क्स जो लाई करते हैं वो इन वर्डिंग्स पे लाई करते हैं कि इस पॉइंट के लिए आप सूटेबल बेसिस का वर्ड यूज करें. सब फॉलो कर रहे हैं? इसके लिए आप वर्ड यूज करें डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल का, और इसके लिए आप वर्ड यूज कर रहे हैं वेयर कॉस्ट एंड डिपार्टमेंट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड. गेटिंग इट गाइस? क्लियर?
तब जाके आपको 3 marks मिल जाएंगे. Everyone got this clear? Understood? कोई problem? कोई issue? Okay. Next we have what is basically, just give me 1 minute. हमारे पास information available है. ठीक है. So what we have is basically the following budgeted information is available for the year ended 31st August 2022. We have the production departments, that is cutting, finishing, and service departments. And the service departments are reapportioned on the, so we have been given how to reapportion as well, and we have been given the factory overheads data as well. So very simple task we have to do here, that we have to reapportion the service departments. Okay, we'll have to reapportion the service departments overhead to the production department. Okay, getting it clear? So we have the service department value. So now numerics is coming. First 3 marks were theory, next 2 marks are numerics. Okay, got it clear? Understood? Any concerns, any questions? So हम क्या करेंगे कि we already know कि जो value है service department की cost है 31,350 is there, sir, and number of employees in cutting are 125 and number of employees in finishing department are 84. So here we go. It will be simple कि आप जब reapportion करेंगे तो let's do it here कि sir 31,350 into हम multiply करेंगे 125 अगर cutting department निकाल लें. People getting it clear? Divided by 125 plus 84. Okay, understood? Hello, total ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो cutting department के overheads आ जाएंगे जो कि service departments का reapportion होगा. Getting it, guys? Clear? Hello. So it's coming 18,750. People got this clear? Yes, sir. Yes. It's coming 18,750. So how we can find out the finishing department then? So we can find out the finishing department in this particular way. Okay, we can subtract as well. ठीक है ना? हम इसको subtract भी कर सकते हैं. जो 31 जो टोटल अमाउंट है आपको सेकंड वाला फाइंड नहीं करना है विद कैलकुलेटर, तो आप जो इसको सब्ट्रैक्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाटएवर वर्क्स, बोथ वेज आर वर्किंग. ओके, गॉट इट क्लियर? ये तो इजी हो जाएगा. ठीक है. 18,750 is there and 31,350 minus 18,750, that will be students 12,600, and this one will cancel out then 31,350. So this becomes finished, nil balance, zero balance. Okay. And the other one is basically these two added together, and here we go. Okay, got it, guys? Clear? Understood? 273,820 plus 18,750, we got that as 292,570. Understood? 189,240 plus 12,600, that is coming 201,840. Okay, following. So these are the values. Got it? So these are the total overheads: 201,840 and 292,570. Understood, or should I explain in more detail? Understood. Can you move forward? Both clear? Yes. Make sure definitions are proper. This is not difficult according to me. So this was free marks in this paper exam. Okay, you just have to reapportion that. Already concepts and video lectures are there, so you can easily work it out. So yeah, moving forward, then we have to do what? We have to calculate an appropriate overhead absorption rate correct to 2 decimal places for each production department. So to 2 decimal places, we have to calculate an overhead absorption rate. So we are going to calculate here. So we should know the formula that cutting department overheads are 292,570, and we are going to divide that by the cutting department most suitable basis. What is the most suitable for cutting department? As you can see, the direct labor hours are less as compared to machine hours. So for the machine hours, you are going to use what? You are going to use 17,900 machine hours per annum. So you are going to use suitable basis for that. Okay, everyone got it? So 17,900 machine hours will be used for dividing, okay, to get the calculate overhead suitable absorption rate. Understood? Clear? 292,570 divided by 17,900. So we are getting it as 14.2
17,900, 292,570. What is the calculator answer? It's coming as $16.34, right? So $16.34 per machine hour. That is our answer. Okay, understood? Got it? How you work out? You have to think about what is the suitable basis. Okay, clear? Understood? Hello, guys, got it? Understood? Ji, Can you sir. move forward? Ji, sir. When we talk about the finishing department, it will be the same way. That is, we have the overheads value 201. We have the overheads value 201,840 divided by this one. That is the suitable basis that we have is basically 7,420. So here we go, 7,420. We divide it because we'll take the larger value for this. So for finishing department, the labor hours are more useful as compared to machine hours. And for the cutting department, sir, machine hours were more useful than the labor hours. Okay, so here we go. So just this thing divided by 7,420. So I'm getting this as 27.20. Make sure to two decimal places. So 27.20 per labor hour. Understood? Got it? So this you got. Up till now, we have solved for 7 marks. Okay, 3, 5, 4 marks numerics and 3 marks theory up till now, part C. So we have absorption costing until in part C. Okay, getting it clear? Understood? Yes. Then the next we have is basically the actual results for the year ended 31st August 2022 were as follows. So now the actual results are there and we have to calculate the under over absorption concept. Okay. So we have to be careful because this is 3 marks each. Okay. So it's a 6 marks question on under over absorption. We have already discussed about it in detail in the video lectures. Okay. So under over absorption are, we have to calculate the under absorption or over absorption of factory overheads for each production department for the year ended 31st August. So what is the first thing that we do? If you talk about the cutting department, your concept should be very clear that, sir, whatever you got the overhead absorption rate, that is 16.34 per machine hours. So follow this. First step will be 16.34 per machine hours multiply by the number of actual machine hours for the overhead. So 17,200 are the actual machine hours and per machine hour is 16.34. People getting with me, following? Hello guys, got it? Ji, sir. So we got that as the value 281,048. This is basically called absorbed overheads, like the actual number of machine hours multiplied with the overhead absorption rate. So we call this as absorbed overheads. And now you compare the absorbed overheads with the actual overhead. So what we can see, what is going to happen, students? We can see that absorbed overheads are less than the actual overheads, which means we will have under absorption. People got it with me, following? Clear? Clear. Okay. So we can say that 281,048 absorbed overheads are less than the actual overheads for the cutting department, sir. So it will be under absorption. You have to write it. 1 mark is for writing under absorption. I'll explain you how do you get marks. Follow carefully. Okay. 1 mark is for getting this value 281,048. 1 mark is for writing that this is under absorption. And 1 mark is for the difference amount. Okay. So it will be 312,600 minus 281,048. That will be this thing. Okay. Got it? So it will be 31,552. Okay. Hope people got this. So this is under absorption. And you can also judge that the machine hours were 17,200 here and machine hours were 17,900. So you estimated that you will have more machine hours, but actually you worked out actual machine hours were less. And that is why it was under absorption as well. Okay, students. Hope everyone gets this clear. Should you move forward? Concept clear on under absorption. If absorbed overheads are less than actual overheads, then we have the under absorption. Okay, if the absorbed overheads
are less than the actual overheads. Okay, people got it? Absorbed overheads are less than actual overheads. We will have under absorption. Okay, understood? Clear? Clear. Same thing we have to do for the finishing department. Make sure you are multiplying properly, correct? $27.20 multiply by the number of actual labor hours, that is 7,210. So we can assume here that the machine hours were quoted more in the budgeted machine hours in the forecast. In the forecast information, the labor hours were forecasted more, but actually less labor hours were used. So we can expect that this might go for over absorption as well. Okay, people getting it? So 7,210 labor hours multiplied by 27.20. I am going to get this as 196,112. That is basically again called the absorbed overheads. And when absorbed overheads are greater than the actual overheads, so we call this as over absorption. Okay, got it, people? Clear? Hello. We will call this Yes, as sir. over absorption. Okay. So another concept we have worked out. So 6, 8, 10, 13 marks we have done for the over absorption. You work out the difference for them, and whatever the difference is, that is basically your third mark. You now know how to get all 3 marks in this type of question. Okay. So it's like, according to me, this is not difficult if you remember it carefully. 196,112 minus 193,400. Just have to remember it, and this will be free marks scoring as well without any difficulty. So 2,712 is a very small difference, but still there is a difference for the over absorption. Okay, so that's the amount, and that will give you 3 marks as well. Okay, clear on this? Clear? Got it? Clear. Understood? Sure about it? Yes. Okay. Okay, now from after 13 marks, so in recent papers, we can easily see that they are testing on absorption costing as well. But because it is easy, so they are merging with marginal costing as well. Okay, so half part of the question, almost 13 marks for absorption costing up till now. But from now onwards, it will start marginal costing. So which means the examiner is trying to test you with all the concepts. Okay, the examiner is trying to test you with all the concept, students getting it. So we got absorption costing working done with only 3 marks theory. And now we have marginal costing with a complete different step procedure. Okay, understanding? So the additional information is at a second factory, marginal costing is used. Are you getting it? So they are completely changing the question in the same, like it, you can say it's a sub part of it. So you should be good at marginal costing as well. Okay, clear on this? Got it, guys? Okay. So make sure everyone can read the question. That a single product at a second factory, we are making a single product, that is product X, is manufactured. However, demand for this product has fallen recently due to increased competition. Okay. And I believe that a lot of students would be struggling in this one and not the previous parts when they have attempted this exam paper. Okay. So however, demand for this product has fallen recently due to the increased competition. The demand has fallen, and now we have been given the per unit information for the product X. Okay, getting it falling clear? Understood, guys? Can I get response? Hello. Yes, sir. Yes. So here we go. We have per unit direct materials $22 per unit. Direct labor is 18, contribution is 20, normal capacity is 14,000 units per month. The factory is currently operating at 75% of normal capacity. All the units produced are sold. Fixed cost are per month are $56,000. Calculate the profit for 1 month. Got it? People clear? Understood? Guys, everyone with me following? So we have to calculate the profit for 1 month, and it's just basically 1 mark only. Okay, so you need to be thinking carefully. Okay, because it's 1 mark, so you need to act smart here. Okay, you don't have to do anything else.
because you should know the formula that you can work out that contribution. If you have been given the contribution minus the fixed cost will give us the profit for 1 month. And this information are per month as well. You have to check whether it's information is per month or not. So the information is per month, that is important. And you just have to calculate the profit for per 1 month. It means you just have to subtract contribution minus fixed cost is equals to the profit for the 1 month. Understood? Got it? Clear? Clear. Guys, got it? Understood? Any problem? No, sir. Okay. So anyone, any questions, any issues? No, sir. Okay. The first thing we need to understand that we already know the fixed cost here. So fixed cost को यहाँ लिख देते हैं कि 50 fixed cost जो है 56,000 वो हमने subtract करनी है तो हमारा profit आ जाएगा. But first thing will be how do you find out contribution? तो contribution जो है वो $20 per unit है. So should we multiply 20 with 14,000 units per month? Or should you multiply at the 75% of normal capacity? So students might make a mistake here. So you need to understand students that जो जिस पर आप work कर रहे हो आप वो निकालोगे. ठीक है. तो ऑपरेटिंग जितने हैं जो एक मंथ में बन रहे हैं एंड वो सबके सब सोल्ड हो रहे हैं तो बेसिकली 14,000 is the 100% capacity and you are working at 75% of that normal capacity, which means you are producing at the moment for product X how much you are producing. People getting it? You are producing for 10,500 units. Okay, understood? 10,500 units you are producing for the 75% of normal capacity. Abhi currently for product X. So students need to understand कि sir contribution निकालने के लिए $20 per unit को हमने multiply करना होगा 10,500 units से. हमारे पास contribution आएगा. हम उसमें से 56,000 fixed cost को subtract करेंगे and we will get to our understood. We will get to our fixed cost. Okay, so we'll get to our profit. Okay, that is 154,000. Understood? Clear? That is what you have to do for 1 mark here. People got it? Clear? Yes, sir. Clear. Sure, no concerns, no problems. Got this clear? Clear. Okay, so you have the additional information. The directors. Now we have 2 options. Okay, that's the most important part. So 9 marks question, 3 marks for option A and 6 marks for option B. So let's work it out. The directors are considering 2 options to increase profit. Okay, so we have to increase profit now. So our target will be to increase profit, students. So the directors are considering 2 options to increase the profits. Option A is reduce the selling price per unit by 5%. Run a 6-month advertising campaign. Are everyone there with me? So you can reduce the selling price by 5%. 6-month advertising campaign at a cost of $1,100 per month. Monthly sales are forecast to increase by 25% on the current levels. Okay, so we have to completely do option A again by considering all of these options. There are all of these factors, 3 factors for option number A. We are not going to do option number B. Are you guys with me following? We are not going to do option B now. First, we'll only stick and focus with option number A. Okay, understand, getting it clear? So follow carefully. Calculate the profit to be made on each option in the first month of production. So in the first month of production, how much profit we need to make in the first month of production. So let's work it out. First thing will be you work out the selling price. Okay, we have to reduce the selling price per unit by 5%. People following, getting it clear, guys? Hello? Clear. You guys Yes, following? sir. Okay. हमें selling price को 5% reduce करना पड़ेगा and that is why the problem will start कि sir selling price तो given ही नहीं है. Everyone getting it? Guys following? The first panic that the student will have in an exam, because in an exam situation is different. So the first panic that will be that the selling price is not given, but you need to know your formulas very well and you can easily work it out. So you should know that selling price minus the variable cost is basically what? Hello? Contribution per unit, right? Selling price minus the variable cost is equals to the contribution per unit. So what we can do, we already have contribution per unit.
we have both the direct materials, variable cost, the direct material and direct labor. So we can easily work out the selling price, and that is why they have given information. So always remember, as I say, that all the information is relevant. अभी कुछ capacity का भी कोई concern आएगा तो we'll discuss that as well. So every adjustment is important and every information product can help you in your point. Okay, so first thing will be you have to do working here only. So you have to calculate, so you can be do it very possible. Selling price will be, that's where it will be, just add contribution plus all the variable cost. So contribution plus $18 for the direct labor and $12 for the direct material, I think. Sorry, $22 for the direct material. So $18 for direct labor, $22 for direct material, and add contribution in it. So we got the selling price. Okay, this was the original selling price. Okay, $60 is the original selling price. Understood? Clear, guys? Got it? Selling price was $60 originally. Now we are going to work out the new selling price because we have to put the discount on it, that we are reducing the selling price by 5 units. So always remember, do it directly. If the selling price was 100% and we are removing it, reducing it by 5%, now the selling price will become 95%. Getting it? So better do it quickly, that you say that $60 was the 100% value. Now the selling price will be 95%. You have other option as well. Okay, first you take out the 5% of it, of the 60, and then subtract from it. The better option is just do 95% of 60. Understood the mathematical way? Or should I explain further? Understood. Guys, got it clear? So $57 is the new selling price. People got it understood? Clear? So new Yes, sir. selling price was $57. One of the task is done. So adjustment number 1 in option number A is done. This adjustment is done. So that's what I've taken into account this one. Always remember, you have to score maximum marks possible. Okay, अगर कोई एक adjustment समझ में नहीं आ रही है, तो not a problem. Try to score as many marks as possible. That should be your target. Then advertising campaign क्या होती है? You should already know. Okay, sir, advertising campaign is fixed cost. So we'll have to cater it later. If you have fixed cost को cater करेंगे, later करेंगे. Next thing you should be concerned about, that is very simple. Okay, your sales units, the forecast of the sales units, it needs to be increased by 25% on the current levels. Okay, our sales forecast needs to be increased by 25% on the current levels. Following with me, Claire? Guys, there with me? Our sales sir. forecast needs to increase by 25% on the current levels. So here we go. The sales forecast current level was what? 10,500 units. Okay, so you have to write down every information here. That's our current level was 10,500 units. Okay, and now new level will be 25% increment in that. Okay, people getting it? So this one I'll do it so that if you are not getting it, you get the basic method as well. So we have to understand that 25% उसमें increase होगा. You can easily work out 125% as well. Let me know you got it. 125% क्यों कर रहा हूँ? Or should I explain? 100% already current level pe, that is already there. 10,500 units are at 100% already, and then you multiply with 25% or 25% on that. So that will give you the 25% excess capacity. Okay, people getting it? मतलब जो forecast बढ़ेगी. Is everyone getting it? Yes, sir. Understood? ठीक है, everyone got this clear? बल्कि मैं कर देता हूँ. If you're not getting it, let me know. 10,500 का 25% निकालें. ठीक है? Capacity उससे बढ़ेगी. इतने से capacity बढ़ेगी. Got it, people? Clear? Can I get response? मतलब 2,625 units extra बनेंगे, increase होंगे. ठीक है? Are you guys getting it? इनको ऐड कर जी, लें तो न्यू Yes. एक्टिविटी, न्यू यूनिट्स या न्यू एक्टिविटी लेवल आ जाएगा. न्यू यूनिट्स आ जाएंगे. कितने न्यू यूनिट्स हो जाएंगे? फॉलो केयरफुली. 10,500 प्लस 2,625, तो ये आ जाएगा. सही है, पीपल गॉट इट? अब ये जो है बन गया 13,125 यूनिट्स. अंडरस्टूड? क्लियर ऑन दिस? ठीक है, क्लियर है गाइस? एवरीवन गॉटिंग 13,125 यूनिट्स. तो अभी भी हम नॉर्मल कैपेसिटी मतलब पूरी अपनी फैक्ट्री यूज करें, इफ यू यूज 100% ऑफ द फैक्ट्री, तो तब भी अभी भी हम 13,125 बनाने, जो कि बेहतर है.
क्योंकि अभी भी हमारे पास कैपेसिटी है कि मेरी जो पूरी फैक्ट्री है वो 14,000 बना सकती है, तो हमें देयर इज नो नीड फॉर ओवर टाइम, देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग एल्स, ओके, नो नीड फॉर ओवर टाइम, नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयरिंग, हम अपनी करंट फैक्ट्री कैपेसिटी में बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक ये अच्छा ऑप्शन है कि सिर्फ यूनिट्स इंक्रीज हो गए हैं और हम बना भी सकते हैं और हमें कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं आ रहा है सिवाय फिक्स कॉस्ट के, ठीक है। अभी देखना, अगर मेरे ख्याल से आई बिलीव के ऑप्शन बी में ना यूनिट्स जो होंगे 14,000 से ऊपर जा रहे होंगे, तो फिर कॉस्ट चेंज होती रहेगी, बहुत सारी कॉस्ट चेंज होती रहेंगी। एवरीवन गेटिंग इट गाइस, क्लियर है? हेलो गाइस, गॉट इट? तो हमारे पास यूनिट्स आ गए, बस आप अब स्टार्ट कर लो। तो यू ऑलरेडी नो द, अच्छा आप कंट्रीब्यूशन डिफरेंट आएगा, सही है। तो नाउ द वर्किंग विल स्टार्ट के पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, सही है। तो कंट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सेम है, खाली सेलिंग प्राइस को हमने रिड्यूस किया था। तो कंट्रीब्यूशन विल बी $57 माइनस द $22 फॉर द डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी, एंड $18 फॉर द डायरेक्ट लेबर। पीपल गेटिंग इट क्लियर? So this is coming as per unit 57 minus 22 minus 18. Understood? So I'm getting now the contribution per unit as $17 per unit contribution, and we are going to multiply with 13,125 units as well. Understood? So this will be our contribution. Let me know if anyone got it. Okay, clear on this? So 223,125 is my contribution. That is total contribution. And sir, the profit will be, you subtract the fixed cost. Okay, fixed cost थोड़ी सी बढ़ेगी, so you can write it down that the profit from option A is going to be this contribution minus the previous fixed cost, that is 56,000. Okay, getting it guys? And 1,100 another advertising campaign cost per month. This is per month, okay? People getting it? This is per month, okay? So we got that, okay? Everyone got it? Yes, sir. 223,125 minus 56,000 minus 1,100. So we got this as 166,025. Okay, so this is the profit from the first option A, and it should be correct as well. Okay, so you will get all 3 marks because I was explaining, so I took time. Otherwise, we could have done it directly quickly for 3 marks as well. Okay, so this is the profit coming. You have to understand कि आपने सारे options को back of the mind रखना है कि fixed cost भी subtract करनी है। Advertising का जब भी word आए, remember कि ये fixed cost है 1,100 per month लिखा था, तो हमने इसको per month पे ही deal करा है। Understanding, getting it? क्योंकि उसमें लिखा था कि made on each option in the first month of production, so we have to be careful. अगर 5-6 months लिखे हो तो हम multiply करते हैं उतने number of months से। Got it guys? Can you move forward? Clear? ये सारे sir. steps हैं. Next we have Clear. option number B, that is more difficult for 6 marks. Okay, we have option number B for 6 marks. I think that will be more tricky, so let's work it out. Okay, now what they are saying, let's do the different color. So you have to discontinue the manufacturing, you have to discontinue manufacturing of product X. So we'll discontinue manufacturing of product X and we'll produce a different product, product Y, with a selling price of $58. So we are just completely ignoring product X now, students, and we are just producing product Y with a selling price of $58 per unit. And I would highly recommend that if you have easy parts, so because I'm explaining, otherwise students should be doing this couple of easy parts very quickly ताकि आप time spend कर सकें option A and option B पे. Getting it? मतलब ये आपको within 5 minutes 7 minutes कर लेना चाहिए absorption costing वाला part, because जो time spend करना है वो product option A और B पे spend करना है. Understanding, it is forecast that the demand will be such that the factory can now operate at 110% normal capacity. Okay, the factory can operate at 110% normal capacity. Then direct materials cost will increase by 10% per unit. Direct labor cost will remain unchanged. However, workers will be paid an overtime premium of 50% for all work. देखा मैंने कहा था आ जाएगा, right? Everyone getting it? कि over normal capacity उनको 50% premium मिलेगा and overtime payment. Machinery will also need some alteration, which will cost 54,000. Non-current assets are depreciated by 25% annum. मतलब आपकी एक fixed cost और बढ़ जाएगी with depreciation cost including in the fixed cost. Okay, the company will need to borrow $30,000 as well to finance the cost of the machinery alterations. Interest at 6% per annum will be charged on this loan. The company will need to borrow $30,000 to finance the cost of this machinery.
एवरीवन फॉलोइंग, क्लियर है बात गाइस? एवरीवन इज विथ मी, ठीक है? Yes, sir. हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, 7 एडजस्टमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वही सेलिंग प्राइस को करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल्स को वर्कआउट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस तो क्लियर हो गई जल्दी से कि सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी सही है। सेलिंग प्राइस हमें पता है सही है। सेलिंग प्राइस क्या हो गई, आपने नोट लिखने की जरूरत नहीं है, बट सेलिंग बता दी $58 पर यूनिट। पहले बात कर लेते हैं मटीरियल्स की, फिर कैपेसिटी की बात भी कर लेंगे। तो मटीरियल्स क्या है, मटीरियल्स इंक्रीज हो रहा है बाय 10% पर यूनिट। एवरीवन फॉलोइंग? तो मटीरियल्स पे गए आप, मटेरियल जो था वो $22 था, तो उनको 10% बढ़ा दिया। गेटिंग इट विद मी गाइस? तो आपने डायरेक्ट मटेरियल्स की हेडिंग डाली और उसकी पहले एडजस्टमेंट कर लिया। अंडरस्टूड? डायरेक्ट मटेरियल्स जो था वो $22 पर यूनिट था, वो 10% एक्सपेंसिव हो गया, तो इसकी कॉस्ट जो है 10% हो जाएगी। ये डायरेक्ट समझ आ रहा है? मैं पूरी वर्किंग करके दिखाऊं गाइस? गॉट इट? समझ आ रहा है। ठीक है, $24.2 पर यूनिट हो गया अब डायरेक्ट मटेरियल। ओके, तो अब पहले हमें, फिर हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 सर कर लिया, सिंपल थी। अब जो लेबर की एडजस्टमेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, लेबर की जो एडजस्टमेंट, उससे पहले हमें यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, बिकॉज लेबर को नॉर्मल कैपेसिटी से एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी पे कर रहे हैं। तो हम यूनिट्स निकाल लेते हैं। यू कैन इजिली से दैट डिमांड जो है फैक्ट्री में इतनी हो जाएगी कि उसको 110% नॉर्मल कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा। तो अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी नॉर्मल कैपेसिटी 14,000 यूनिट्स है पर मंथ, और रिसेंट पेपर्स में वो यही बात कर रहा है, कैपेसिटी पे क्वेश्चन दे रहा है। तो नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो 14,000 है, आपने लिखा, या आपको सब वर्किंग शो करनी है, आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। 14,000 यूनिट्स, उस पर आप 110% लगा दें, क्योंकि जो है वो 100% कैपेसिटी है अभी, और आपने 110% पे जाना है। तो इट मतलब कि आप 15,400 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे आप, ठीक है? पीपल गेटिंग इट? हम 15,400 यूनिट्स अब प्रोड्यूस करेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड? वाई के प्रोडक्ट के लिए, फॉर प्रोडक्ट वाई हम 15,400 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, सेल करेंगे, बिकॉज हम नॉर्मल कैपेसिटी से ऊपर काम करें, 110% पे काम करें। तो 14,000 से ऊपर यूनिट्स कितने आ रहे हैं? 10% यूनिट्स एक्स्ट्रा, 15,400 यूनिट्स आ रहे हैं, दैट इज 1,400 हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए जो लेबर है, लेबर की कॉस्ट जो है वो अनचेंज्ड है। तो लेबर की जो कॉस्ट है वो $18 पर यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट्स? लेकिन वो कह रहे हैं कि वर्कर्स को थोड़ा सा ओवर टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा फॉर ऑल वर्क ओवर द नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मल कैपेसिटी का ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर की कॉस्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम डायरेक्ट लेबर की बात करें, तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के डायरेक्ट लेबर को दो हिस्सों में करेंगे। डायरेक्ट लेबर को हमने दो हिस्सों में करना पड़ेगा। एक तो ये है कि जिनको हम, जो 14,000 यूनिट्स बना रहे हैं, उनको हम सेम सेम पे वेज पर पे करेंगे, दैट इज $18 पर यूनिट पर ही पे करेंगे, ठीक है जी? एवरीवन गेटिंग इट? एक जो डायरेक्ट जो लेबर है, जो जो नॉर्मल कैपेसिटी से नीचे पे काम कर रहे हैं, 14,000 में काम कर रहे हैं, तो ये आ गई लेबर की एक कॉस्ट, ठीक है? और दूसरी कॉस्ट ये आएगी कि जो नॉर्मल कैपेसिटी से ओवर है, आई गाइस पीपल गेटिंग इट? नॉर्मल कैपेसिटी जो ऊपर है वो कितने यूनिट्स हैं, आप सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। 15,400 माइनस 14,000 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स आए उनको ओवर टाइम पे करना है आपने। तो ओवर टाइम का मतलब है कि उनको $18 मिलेंगे, और 50% ओवर टाइम मिलेगा। तो $18 का 50% क्या होता है स्टूडेंट्स? $18 का हाफ क्या होता है? $9। तो इसका मतलब इनको $27 पे पेमेंट मिलेगी। गेटिंग इट गाइस? सब फॉलो कर रहे हैं? $18, 18 प्लस $9 पे इनको पेमेंट मिलेगी। एवरीवन विथ मी? इनको Yes, sir. $27 की पेमेंट मिलेगी फॉर 1400 यूनिट्स। हाँ बोलो, किसको समझ में नहीं आया तो डिस्कस करते हैं। यस, कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्न, एनी डिस्कशन? नो सर। क्लियर है? बोथ गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो बस उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, इफ दिस इज क्लियर। क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी? तो सेलिंग, अब कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन विल बी, हम ये कह देंगे कि भाई वी हैव 154,000 15,400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज $58। या बल्कि ऐसा करते हैं कि बेटर वे ऑफ डूइंग दिस, हम एक कॉलम बना लेते हैं अब, क्योंकि हमने सारी ऑलमोस्ट सारी वर्किंग्स कर लिए, तो यहाँ पर वर्किंग्स शो कर देते हैं। एक दो और वर्किंग्स होंगी तो यहाँ शो कर देते हैं, बाकी यहाँ पर सारा काम हो जाएगा। गेटिंग इट पीपल? क्लियर? ओके, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस हो जाएगी 15,400 एट द रेट ऑफ $58 पर यूनिट। फिर डायरेक्ट मटेरियल्स 15,400 units at the rate of $24.2. Okay, people getting it? Direct labor जो होगा वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, जस्ट ऐड कर देंगे $252,000 प्लस 37,800। अंडरस्टूड? तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सर। पीपल गॉट इट? जल्दी से वर्किंग कर लेते हैं। कैलकुलेटर प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स चेक कर लें। So we got 893,200. ठीक है जी। Then we got 15,400 into 24.2, 15,000. Then ये माइनस हो जाएगा 372,680। फिर डायरेक्ट लेबर 252,000 plus 37,800. So we got it as 289,800. Guys, following everyone clear? And then next we have 893,200 minus 372,680 minus 289,800. So we got this as contribution 2,030, 2,30,720. Okay, got it? हमारे पास अब फिक्स कॉस्ट माइनस करने को रह गई है, तो हम फिक्स कॉस्ट रिमूव करेंगे and that will give us the profit from option B. People got it? Guys, clear? हेलो, Yes, तो आप I'm फिक्स clear. कॉस्ट पे वर्किंग कर लेते हैं। All adjustments related to this are done. Make sure आप रीचेक भी कर लें। 1 is done, 2 is done, 3, 4 is done. ठीक है, 5 is done. 1 का एक पॉइंट आएगा, I'm going to explain that कि वो क्या पॉइंट होगा। सही है, 1 से रिलेटेड एक पॉइंट है तो मैं बताऊंगा आपको। तो हम 6 जो है, अब मशीनरी की बात कर लेते हैं। मशीनरी विल नीड सम ऑल्टरेशंस, राइट? तो मशीनरी की कॉस्ट तो एक नॉन करंट एसेट है, वो तो यहाँ नहीं लेंगे, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। मशीनरी की जो कॉस्ट है 54,000, वो तो एक एसेट है, राइट? होप एवरीवन अंडरस्टैंड द मशीनरी इज अ नॉन करंट एसेट, तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो कभी भी नहीं आता। बट यू अंडरस्टैंड कि नॉन करंट एसेट्स की डेप्रीसिएशन आती है एज एन एक्सपेंस, तो हम उसको फिक्स्ड एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स आर डेप्रीशिएट 25% पर एनम। तो हम जो है ये पर एक महीने के लिए कर रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे। पीपल विथ मी फॉलोइंग कि सर हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन निकाल रहे हैं, विच इज $54,000 into 25%. This will give us for the whole year and we'll do it divided times 1/12. तो एक महीने की हमारे पास depreciation आ जाएगी। People got this clear? So it's coming as $1,125 as the depreciation. How many people got this? Clear है? Understood? एंड सिमिलरली फिर ये जो हम 30,000 का लोन ले रहे हैं बोरो करने के लिए इस मशीनरी को, तो ये भी इसी की फिक्स कॉस्ट है कि आपके इंटरेस्ट चार्जेस है, फाइनेंशियल चार्ज, तो 6% पर एनम है। तो आप इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी निकालेंगे कि तो इसमें इसमें जो है वो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वी हैव इंटरेस्ट एक्सपेंस दैट इज 30,000 लोन इंटू 6% इंटरेस्ट। अगेन ये पूरे साल का आ जाएगा, आपको एक महीने का चाहिए तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। 30,000 into 6% students divided by 12, so I'm getting it as $150. People got it? तो यूजुअली स्टूडेंट्स फॉरगेट कर जाते हैं कि मंथ को कंसिडर नहीं करते, बिकॉज उसने एग्जामिनर ने स्टार्ट में कहा है कि ये मंथली एडजस्टमेंट्स हैं, तो आपने केयरफुल रहना है। स्टूडेंट्स क्लियर है? एवरीवन गेटिंग इट? तो ये सारे हमारे आंसर थे जिन पे आपको मार्क्स मिलेंगे। होप पीपल आर गेटिंग एंड फॉलोइंग विथ मी। ओके, अंडरस्टूड गाइस? Understood. क्लियर है? श्योर अबाउट इट? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब अंडरस्टैंड ये करना है कि हमारी फिक्स कॉस्ट होगी क्या। तो स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रोडक्ट एक्स तो मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया है, लेकिन प्रोडक्ट एक्स की जो फिक्स कॉस्ट है वो स्टिल लायबल है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट डजंट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट का फर्क, फिक्स कॉस्ट को इट डजंट मैटर कि whether you are still producing the product, whether you have stopped manufacturing the product, you are still, fixed cost is coming whether you produce anything 0 units or whether you produce 100 units. So fixed cost is coming, it's going to be recurring again and again. Getting it? So that is why you will say that fixed costs are 56,000 already. Doesn't matter. That's why point 1 is still was important. कि आप manufacturing of X, because a lot of students might not have taken this into account. They might have forgotten. So yeah, so that is not possible. You have to take into account. I have told the reason
कि भाई डजेंट मैटर कि आप उसको मैन्युफैक्चर बंद कर रहे हो नहीं कर रहे, उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा इन दोनों, ये सिर्फ ऑप्शन बी की कॉस्ट है तो हमने ये इंक्लूड कर दिया। जैसे ऑप्शन नंबर ए के अंदर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी, हमने वो टेकन किया था, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉस्ट है रिलेटेड टू फिक्स कॉस्ट, हमने वो एंटर कर लिया। पीपल गॉट इट 56,000 प्लस 1125 प्लस 150, I am getting that 57,275, and when you subtract this, you will get the answer, students. Whatever the final answer coming, that is our answer as well. Okay, people got this clear? So 230, 720 minus 572, 75. So we got it as 173,445. Okay, people got this clear? So you Clear. have marks for finding out fixed cost. 1 mark must be for this. 1 mark must be for this. 1 mark for the labor working. 1 mark will be for the units as well. 1 mark for the profit as well. So 1, 2, 3, 4, 5, and 1 mark you can say for the direct materials as well. So 6. Got it? So each unit you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can say like this as well. कि आपको इनके marks मिलने 1 each. Getting it? Contribution correct निकालने के, and those how it goes. Okay, people got it clear? Understood? With Clear. this, the numerics finishes, but the theory is still left. Now it's not called a theory, it is going to be called a analysis question for 7 marks, which means in the overall 30 marks absorption and marginal costing question, 3 marks comes as theory, 7 marks come as analysis, and 20 marks were off. 20 marks were off for what? 20 marks for basically the numerics. Advise the directors which option they should choose. Justify answers by considering both. उन्होंने ब्लैक में बोल्ड में लिखा हुआ है कि आपने फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है, आपने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है। पीपल गेटिंग इट क्लियर है? अंडरस्टूड? सो पहले बात करते हैं कि ऑप्शन ए की पहले देख लेते हैं प्रॉफिट किसका ज्यादा आ रहा है। 166,0525 एंड 173,455. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन सी के, are you guys getting it? According to this, option number B का profit ज़्यादा आ रहा है. People getting it clear? Understood? Guys following? Clear? Yes, sir. Okay. Yes. So now follow carefully. What we have to do. Let's say if we are talking about option number A first. So option number A में क्या pointers आएंगे? Option number A, we need to write it down. Couple of good points के option A profit. पहले तो आप ये लिख देंगे कि the profit from a profit for 1 month for option A, profit for 1 month for option A is less compared to profit from option B. Okay, so compared to from the option B. Okay, so ये तो एक आपने सब first point आपने ये लिख दिया कि profit from 1 month for option A is less compared to profit from option B. What are the benefits, good things about so you are reducing the selling price which will increase your sales. ठीक है, I can also write another point जैसे मैंने discuss किया था कि in total option A में 13,125 units बन रहे. Getting it everyone? In total option A में 13,125 units बन रहे. So still we can say यही point I continue करते हैं. The factory is still not operating at normal capacity. The factory still have some spare capacity available. The factory still have some spare capacity available. Some spare capacity available which can be utilized. The factory have still some spare capacity available which can be utilized as it is not on the it is not on the normal product the normal activity level. Getting it, people following? Guys, clear? Clear. ठीक है, तो ये लिख सकते हैं the factory still have some spare capacity which can be utilized as well. This will be a non-financial factor. एक रेड वाले में financial लिख दिया, ग्रीन वाला non-financial factor है कि factory still have spare capacity available which can be utilized. So which can be utilized. Similarly और क्या pointers हैं option A में? तो आपको advertising खर्च करनी पड़ेगी $1,100 की. तो you have to see कि आपकी कोई variable cost नहीं बढ़ रही है, बट आपकी एक फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है हर मंथ. 1100 पर मंथ यूनिट का एक्सपेंस आ रहा है.
और ये डिपेंड करना है कि वेदर के it is important to consider this as well. It is important to consider about it is important ये भी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर होगा कि it is important to consider whether sales whether क्योंकि तो 1 महीने का है ना, whether sales forecast will show continuous improvement, whether sales forecast will be accurate, whether sales forecast will be accurate or increase, whether sales forecast will be accurate or increase in future. Otherwise, the advertising will be an extra burden. Otherwise, advertising will be an extra cost. Getting it? Otherwise, advertising will be an extra burden. Advertising will be an extra burden on fixed cost. तो आप ये pointers भी लिख सकते हैं. ठीक है, people got it clear? सही है. तो कुछ पॉइंट्स ऑप्शन ए के लिख दिए, अब कुछ पॉइंट्स ऑप्शन बी के लिखते हैं. डेफिनेटली ऑप्शन बी क्या है कि उसका हायर प्रॉफिट है. सही है, तो आप उसके पॉइंटर्स लिखें फाइनेंशियल कि ऑप्शन बी इज डेफिनेटली हायर प्रॉफिट, मोर देन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी चल रही है उसमें. तो यू कैन राइट डाउन दोज पॉइंट्स एज वेल. ओके, बट व्हाट शुड बी द डिफरेंट पॉइंट? ओके, सो वी कैन से कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी में जो मेन फैक्टर्स हैं वो यही हैं कि यहाँ पर आपको एक न्यू यू हैव टू डू अ न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू नॉन करंट एसेट परचेज करना पड़ेगा, यू हैव टू पे लोन एज वेल एंड द फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीजिंग मच मोर. ठीक है, बट हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है. सही है, तो यू कैन, अच्छा अगर आपने एक बार लिख दिया ना कि प्रॉफिट फॉर 1 मंथ, तो फिर आप वापस नहीं लिखें. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. सही है, तो ऑप्शन बी में लिख सकते हैं कि पॉइंटर्स आप जो डिस्कस कर सकते हैं वो यही डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो बहुत मैटर करेंगे. ठीक है, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ये फाइनेंशियल फैक्टर हो जाएगा कि इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस will add to fixed cost, therefore reducing profits in future, will add to fixed cost, therefore reducing profits. Similarly, आप बाकी उसकी क्या बात कर सकते हैं? अगर आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देखें तो क्या हो सकते हैं ऑप्शन बी के लिए? जैसे ऑप्शन ए में है कि स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, तो आपको वो यूज़ करना चाहिए कि ये जो सेल्स फोरकास्ट है वो एक्यूरेट है या नहीं है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन के पैसे ज़ाया तो नहीं हो रहे. एवरीवन गेटिंग इट? तो ऑप्शन बी में होगा कि डायरेक्ट लेबर अवेलेबल भी है करने को, मटेरियल की जो यूनिट कि वी हैव टू राइट डाउन के डायरेक्ट लेबर, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन और यू हैव टू राइट इट डाउन कि जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर होगा कि द कंपनी it is important to know whether the workforce, whether labor is willing to do overtime or not. ठीक है, ये important होगा जानने के लिए कि लेबर जो है वो willing है to do overtime or not, and if their productivity is affected or not, and productivity related matters ये लिख देते हैं. ठीक है, कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी चेक करनी होगी कि वैसे प्रोडक्टिविटी कम तो नहीं हो रही, वरना प्रोडक्शन कम होगी, वेस्ट ज्यादा होगी. People getting it? So the productivity related matters. Okay, got it? Understood? तो आपने प्रॉपर टाइम स्पेंड करने 7-8 मिनट्स 10 मिनट्स पे करने, तभी जाके आपको जो है ना वो क्लियर होगा. ये सही है, गॉट इट? ठीक है, ओके. सो डू ओवरटाइम एंड प्रोडक्टिविटी रिलेटेड मैटर्स. ओके, ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए हैं, 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे. और ये पॉइंट्स आपको ध्यान में है तो आप जरूर इसमें करें कि मटेरियल्स जो है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो ये चीज़ है. हाँ, कि मे बी यू हैव टू चेक एज वेल कि डिमांड है प्रोडक्ट वाई की या नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट एक्स जो है वो प्रोडक्ट एक्स द मैन्युफैक्चरर नीड्स टू इंश्योर, द कंपनी नीड्स टू इंश्योर, ये भी लिख सकते हैं. गेटिंग इट गाइस? द कंपनी नीड्स टू इंश्योर whether demand is there, to ensure whether demand is available for product B or not. Okay, for product Y, sorry, whether demand is available for product Y, और ये भी हो सकता है कि अभी भी कुछ, क्योंकि ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहे हैं प्रोडक्ट एक्स, कैन यू गाइस हियर मी? हेलो. तो ये हो सकता है कि वो कोई जो कंज्यूमर्स दोज हु वांट प्रोडक्ट एक्स, तो उनको वो नहीं मिल रहा हो. गेटिंग इट?
गॉट इट गाइस, क्लियर है? तो फाइनल sir. आंसर मेरा ये होगा कि फाइनल आंसर मैं दूंगा कि फिर मैं एक स्टेटमेंट में लिखूंगा कि द डायरेक्टर्स शुड चूज ऑप्शन बी, और उसका रीजन ये होगा कि द डायरेक्टर्स शुड चूज ऑप्शन बी बिकॉज हायर प्रॉफिट है. द डायरेक्टर्स शुड चूज ऑप्शन बी because of higher profit and already demand for A is declining ना. उसने मेंशन किया था, अगर आपको याद हो, कि डिमांड फॉर यूनिट ए, तो मैं सारे वैसे साइड के सारे पॉइंटर्स आप दिमाग में रखें. तो मैं ये लिख के डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट एक्स इज फॉलन ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन, सो न्यू मार्केट स्ट्रेस करनी चाहिए. ठीक है, तो मैं अपना जस्ट द डायरेक्टर्स शुड चूज ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट्स एंड सिमिलर फिक्स कॉस्ट. ओके, अगर देखा जाए, मैंने एक और वैल्यू चेक की थी कि अगर आप इसकी फिक्स कॉस्ट देखो 57,275 आ रही है, और इसकी भी समथिंग इनको ऐड कर दो तो 57,000 ही आ रही है. तो दोनों की ऑप्शन बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट्स एंड सिमिलर फिक्स कॉस्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर फिक्स कॉस्ट है उनकी. ठीक है, तो इतना कोई फर्क नहीं आ रहा है. एंड सिमिलर फिक्स कॉस्ट, द डायरेक्टर ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट्स एंड सिमिलर फिक्स कॉस्ट, एंड due to demand of product A decreasing, it's better to try new markets. And due to demand of product A is declining, it's better to try new markets. तो ये मेरा ओपिनियन हो जाएगा. ठीक है, गेटिंग इट गाइस? तो आपने अपना ओपिनियन अच्छा सा लिख दिया विद स्टार किसको लिया, तो ये कर सकते हैं. ठीक है, गॉट इट, क्लियर है? सही है. अब ऑन द अदर हैंड एक वन स्टूडेंट कैन राइट कि यू शुड गो फॉर ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें आप उसमें प्रोडक्ट एक्स बना रहे हो, तो यू आर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ दोज कस्टमर्स हु आर लॉयल टू यू, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो आपसे बार बार ले रहे हैं. तो यू कैन मेक अ ब्रांड इमेज इन दैट फॉर प्रोडक्ट ए लेटर ऑन. तो यू शुड स्टिक विद द ऑप्शन ए एंड प्रोड्यूस एक्स ओनली. डोंट गो फॉर प्रोडक्ट वाई बिकॉज ऑफ द compatibility and this way, in this way. ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो. गॉट इट गाइस, क्लियर? Clear. People got it clear? Okay, so we'll stop here and we'll continue in the next class with more questions. This is May-June 2023, paper 2, variant 2. Okay, so the recent paper for the variant 2 of May-June 2023. Okay, I'll send the screenshots and you can revisit and revise. Okay, got it clear?